अम्बर्टो इको एक इटालियन फ़िलासफ़र था, नॉवेलिस्ट था और सेमियोटिशियन था, जिसने उर-फैशिज़म या फिर इटर्नल फैशिज़म के नाम से एक ऐसे लिखा जिसमें वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करता है फैशिज़म का, इसकी डेफिनेशन देता है और इसके कुछ फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स बयान करता है। 1988 में एक यूनिवर्सिटी ने एक डिबेट रखी बिटवीन सेवरल इंटेलेक्चुअल्स। यहाँ पे सेंट्रल थीम यह था इस टॉक का कि क्या फ़वाइद हैं फॉरगेटफुलनेस के, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फॉरगेटफुलनेस। और इस टॉक में काफ़ी स्पीकर्स ने ये बात बयान करने की कोशिश की कि आपको अपना मुल्क का दर्दनाक माजी भुलाना पड़ता है इफ़ यू आर टू प्रोग्रेस। यू हैव टू forget it for a while so that you can progress from that point. You can't get stuck in the past. You can't forever reminisce the mistakes of the past. इसके रिस्पॉन्स में अम्बर्टो इको ने एक ऐसे लिखा, बल्कि 5 ऐसे लिखे जिसको उसने 1995 में पब्लिश किया। इनमें से एक ऐसे ये था Ur-Fascism, इवन दो इसको इंडिपेंडेंटली पब्लिश किया गया इन 1997। अम्बर्टो इको इटली में बड़ा हुआ अंडर मुसोलिनी's fascist dictatorship, and his introduction to fascism was in grade school reciting fascist loyalty pledges. उसने फर्स्ट हैंड विटनेस किया कि इस फैशिस्ट पॉलिटिकल थॉट का क्या इम्पैक्ट था उसकी मुल्क पर, और इसका सब्सिक्वेंट कोलैप्स का इफेक्ट भी उसने नोटिस किया। और इन एक्सपीरियंसेस ने इसको फोर्स किया टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फैशिज्म। वो आर्ग्यू करता है कि फैशिज्म की कोई फिक्स्ड एसेंस नहीं है, रादर हमें इसको समझना पड़ेगा एज बीइंग अ सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल ट्रेड्स जिनमें एक बड़ी नियर रिजेम्बलेंस है टू ईच अदर। वो इन ट्रेड्स में से 14 ट्रेड्स आउटलाइन करता है जिनको वो कलेक्टिवली कहता है उर-फैशिज्म। इको का प्रिंसिपल थीसिस ये है कि फैशिज्म एक कोई यूनिक आइडियोलॉजी नहीं है दैट इज़ कम एंड गॉन, लेकिन वो एक रिकरिंग फिनोमिनन है रूटेड इन ह्यूमन साइकी एंड इमोशंस। ये एक डिजीज़ है, एक पैरासाइट है, एक सिकनेस है इन द हार्ट ऑफ मैन, और ये बाकी डिजीज़ की तरह प्रेजेंट करती है अपने आप को थ्रू सेवरल सिम्टम्स, लेकिन इसका एक ही कोर रीजन है। इको कहता है fascism became an all-purpose term because one can eliminate from a fascist state one or more features and it will still be recognizable as fascist. Take away imperialism from fascism and you still have Franco and Salazar. Take away colonialism and you still have the Balkan fascism of the Stashes. Add to the Italian fascism a radical anti-capitalism which never much fascinated Mussolini and you have Ezra Pound. Add a cult of Celtic mythology and the Grail mysticism completely alien to official fascism and you have one of the most respected fascist gurus, Julius Evola. Eco 14 key elements या traits पेश करता है which he refers to as ways that commonly appear in fascist movements. Even though ये सारी traits हर fascist movement में present नहीं भी होती, लेकिन they together create a recognizable pattern. तो इको के मुताबिक उर-फैशिज्म का जो पहला फीचर है, पहली जो ट्रेट है इसकी, वो है कल्ट ऑफ ट्रेडिशन विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय कल्चरल सिंक्रेटिज्म इवन एट द रिस्क ऑफ इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। जब सारा ट्रुथ इस फैशिस्ट स्टेट के मुताबिक पहले से ही रिवील हो चुका है बाय ट्रेडिशन, तो कोई न्यू लर्निंग अगर नहीं हो सकती, सिर्फ फर्दर इंटरप्रिटेशन और रिफाइनमेंट हो सकती है। वो कहता है ट्रेडिशनलिज्म इज़ ऑफ कोर्स मच ओल्डर देन फैशिज्म. Not only was it typical of counter-revolutionary Catholic thought after the French Revolution, but it was born in the late Hellenistic era as a reaction to classical Greek rationalism. In the Mediterranean basin, people of different religions, most of them indulgently accepted by the Roman pantheon, started dreaming of a revelation received at the dawn of human history. This revelation, according to the traditionalist mystique, had remained for a long time concealed under the veil of forgotten languages, in Egyptian hieroglyphs, in the Celtic runes, in the scrolls of the little-known religions of Asia. This new culture had to be syncretistic. Syncretism is not only, as the dictionary says, the combination of different forms of belief or practice. Such a combination must tolerate contradictions. Each of the original messages contains a silver of wisdom, and whenever they seem to say different or incompatible things, it is only because all are alluding allegorically to the same primeval truth. As a consequence, there can be no advancement of learning. Truth has been already spelled out once and for all, and we can only keep interpreting its obscure message. Umberto Eco बयान करता है फिर सेकंड ट्रेट ऑफ उर-फैशिज्म, जो है द रिजेक्शन ऑफ मॉडर्निज्म, जो वेस्टर्न कल्चर की रैशनलिस्टिक डेवलपमेंट को व्यू करता है एज अ डिसेंट इनटू डिप्रेविटी. इको इसको
डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अ रिजेक्शन ऑफ सुपरफिशियल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, क्योंकि काफ़ी फैशिस्ट रजीम्स अपनी इंडस्ट्रियल पोटेंसी को साइड करते हैं एज अ प्रूफ ऑफ द वाइटैलिटी और द यूजफुलनेस ऑफ देयर सिस्टम्स। वो कहता है ट्रेडिशनलिज्म implies the rejection of modernism. Both fascists and Nazis worshipped technology, while traditionalist thinkers usually reject it as a negation of traditional spiritual values. However, even though Nazism was proud of its industrial achievements, its praise of modernism was only the surface of an ideology based upon blood and earth. The rejection of the modern world was disguised as a rebuttal of the capitalistic way of life, but it mainly concerned the rejection of the spirit of 1789 and of 1776, of course. The Enlightenment, the Age of Reason, is seen as the beginning of modern depravity. In this sense, Ur-Fascism can be defined as irrationalism. तीसरी ट्रेट वो बयान करता है एज द कल्ट ऑफ एक्शन फॉर एक्शन सेक, जो डिक्टेट करता है कि एक्शन की वैल्यू इन इट सेल्फ एंड इट शुड बी टेकन विदाउट इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्शन। ये कनेक्टेड है विद एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म एंड इरेशनलिज्म एंड इट ऑफन मैनिफेस्ट्स इन अटैक्स ऑन मॉडर्न कल्चर एंड साइंस। चौथी ट्रेट है कि ये मानना कि डिसएग्रीमेंट इज ट्रीजन। फैशिज्म डीवैल्यू करता है इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को और क्रिटिकल रीजनिंग को एज बैरियर्स टू एक्शन, और ये आउट ऑफ फियर करता है कि ये एनालिसिस जो है कहीं ये इसके सिंक्रेटिस्टिक फेथ के अंदर जो एम्बॉडीड कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको एक्सपोज ना करते। अगली ट्रेट है फेयर ऑफ डिफरेंस, which fascism seeks to exploit and exacerbate, often in the form of racism या फिर an appeal against foreigners and immigrants. Sixth trait है appeal to a frustrated middle class, fearing economic pressure from the demands and aspirations of lower social groups. Eco कहता है Ur-Fascism derives from individual or social frustration. That is why one of the most typical features of the historical fascism was the appeal to a frustrated middle class, a class suffering from an economic crisis or feelings of political humiliation and frightened by the pressure of lower social groups. In our time, when the old proletarians are becoming petty bourgeoisie and the lumpen are largely excluded from the political sense, the fascism of tomorrow will find its audience in this new majority. आठवां ट्रेट फैशिज्म का है its obsession with the plot and the hyping up of an enemy threat. इसमें एक अपील होता है to xenophobia with the fear of disloyalty and sabotage from marginalized groups living within the society. Eco कहता है to people who feel deprived of a clear social identity, or fascism says that their only privilege is the most common one, to be born in the same country. This is the origin of nationalism. Besides, the only ones who can provide an identity to the nation are its enemies. Thus, at the root of the Ur-Fascist psychology, there is the obsession with the plot, possibly an international one. The followers must feel besieged. The easiest way to solve the plot is the appeal to xenophobia. But the plot must also come from the inside. Jews are usually the best target because they have the advantage of being at the same time inside and outside. In the US, a prominent instance of the plot obsession is to be found in Pat Robertson's The New World Order, but as we have recently seen, there are many others. अगला ट्रेट बयान करते हुए इको कहता है कि फैशिस्ट सोसाइटीज़ रिटोरिकली अपने एनिमीज़ को कास्ट करती हैं एज एट द सेम टाइम टू स्ट्रॉन्ग एंड टू वीक। एक तरफ फैशिस्ट्स प्ले अप द पावर ऑफ सर्टन डिसफेवर्ड एलीट्स टू इनकरेज इन देयर फॉलोअर्स अ सेंस ऑफ ग्रीवेंस एंड ह्यूमिलिएशन, और दूसरे हाथ पे यही लीडर्स इन एलीट्स की डेकेडेंस को उभारते हैं एज अ प्रूफ ऑफ देयर अल्टीमेट फीबलनेस इन द फेस ऑफ एन ओवरवेलमिंग पॉपुलर विल। नाइन्थ ट्रेट इको बयान करते हैं और वो कहता है कि पैसिफिज्म इज़ ट्रैफिकिंग विद द एनिमी, और ये एक और ट्रेट है ऑफ फैशिज्म, क्योंकि लाइफ इनके नज़र में एक परमानेंट वॉरफेयर है एंड देयर मस्ट बी ऑलवेज एन एनिमी टू फाइट। फैशिज्म की फिर 10वीं ट्रेट है कंटेम्प्ट फॉर द वीक, जिसके साथ साथ एक शोविनिस्टिक पॉपुलर एलिटिज्म भी आता है जिसमें हर मेंबर सोसाइटी का सुपीरियर है टू आउटसाइडर्स बाय वर्च्यू ऑफ बिलोंगिंग टू द इन ग्रुप। इको इस बारे में कहता है कि देयर इज़ अ डीप टेंशन इन द फंडामेंटली हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ फैशिस्ट पॉलिटीज़ एज encourage leaders to despise their underlings up to the ultimate leader who holds the whole country in contempt for having allowed him to overtake it by force. अगली ट्रेट है that everybody is educated to become a hero, which leads to the embrace of a cult of death.
जो उर फैशिस्ट हीरो है वो इम्पेशेंट है मरने के लिए, इज़ इम्पेशेंट टू डाई, और इसी इम्पेशेंस के अंदर वो मोर फ्रीक्वेंटली बाकी लोगों को लीड करता है टूवर्ड्स दैट्स देन हिमसेल्फ. The 12th trait of fascism is machismo, which sublimates the difficult work of permanent war and heroism into the sexual sphere. Eco कहते हैं, since both permanent war and heroism are difficult games to play, the Ur-Fascist transfers his will to power to sexual matters. This is the origin of machismo, which implies both disdain for women and intolerance and condemnation of non-standard sexual habits from chastity to homosexuality. Since even sex is a difficult game to play, the Ur-Fascist hero tends to play with weapons. अगली trait है selective populism. The people conceived monolithically, वो possess करते हैं common will जो distinct है और जो superior है to the viewpoint of any one individual. लेकिन क्योंकि कोई भी mass of people truly unanimous नहीं हो सकता, तो जो leader है वो अपने आप को responsible समझता है for being the interpreter of the popular will, though truly he alone dictates it. तो फैशिस्ट इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए डीलेजिटिमाइज करते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, जिनको वो एक्यूज़ करते हैं कि दे नो लॉन्गर रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल. 14th और लास्ट ट्रेट फैशिज्म का इको बयान करता है एज न्यू स्पीक. फैशिज्म एम्प्लॉय करता है और प्रमोट करता है एक इम्पोवरिश्ड वोकैबुलरी इन ऑर्डर टू लिमिट क्रिटिकल रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. इको कहता है और फैशिज्म स्पीक्स न्यू स्पीक. न्यू स्पीक वॉज इन्वेंटेड बाय ऑरवेल इन 1984. But elements of Ur-Fascism are common to different forms of dictatorship. All the Nazi or fascist school books made use of an impoverished vocabulary and an elementary syntax in order to limit the instruments for complex and critical reasoning. But we must be ready to identify other kinds of newspeak, even if they take the apparently innocent form of a popular talk show.